हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडीज़ में। तो देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे टैट मेडिकल का एग्ज़ाम जो कि 12 दिसंबर 2020 को इवनिंग सेशन में हुआ है। तो अभी तक जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं जीके सेक्शन, केमिस्ट्री सेक्शन। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी और जोलॉजी का सेक्शन। तो चलिए डिस्कस करते हैं 61 क्वेश्चन से। तो देखिए 61 क्वेश्चन से ये स्टार्ट है बॉटनी सेक्शन। क्वेश्चन है, दिस स्पॉन्ज इज़ अ कॉस्टली मैरिज गिफ्ट इन जापान एज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ यूनियन टिल डेथ। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, दैट इज़ यूप्लेक्टेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 62, ह्यूमन किडनीज इज़। तो options are metanephric, mesonephric, pronephric and none of these. Then the correct answer is option A, metanephric. अगला क्वेश्चन है, which of the following match the following columns, column 1 and column 2. ये vitamins के names हैं जो साइंटिफिक नेम के साथ जो है वो मैच करने हैं। तो देखिए विटामिन डी का जो है वो कैल्सिफेरोल होता है, B12 का साइनोकोबाला अमाइन होता है। देन इसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन बी और डी है, लेकिन विटामिन ई अब हमें चेक करना है कि विटामिन ई का साइंटिफिक नेम कौन सा है और विटामिन के का। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट वन होगा ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। विटामिन डी का विटामिन ई का जो है वो टोकोफिरोल है और विटामिन के का जो है वो फाइलोक्विनोन है। देन ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिजीज़ आल्सो नोन एज दम दम फीवर। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस है काला अज़ार, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया एंड इन्फ्लुएंजा। Option D is the right one, that is option A is the right one, that is Kala Azhar. Kala Azhar is right one. Next question is 65. Which light range is most effective in photosynthesis? Then option B is the right one, that is red. Next question is, a non-digestive enzyme that converts trypsinogen to trypsin is. Option C is the right one, that is enterokinase. फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास जो है वो सबसे पहले अपडेट्स पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 67. 67 is, coconut milk contains. Option D is the right one, that is cytokinin. Next question is, trisomy of 21st chromosome causes. Option D is the right one, that is Down's syndrome. Next question is, which antibody develops in case of allergy? ऑप्शन डी इज़ द राइट वन, दैट इज़ IgE। देखिए ये क्वेश्चन जो है जो अभी हाल ही में TGT मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट वन है और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70. 70 इज़, क्रेंच एनाटॉमी इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन, दैट इज़ C4 प्लांट्स। Next question is, study of pollen grains is. Option B is the right one, that is palynology. Next question is, entry of food into the larynx is prevented by. Then option B is the right one, that is epiglottis. Next question is, which one is the first vertebrate to have evolved? Then option C is the right one, that is jawless fish. Next question is 74. Energy transfer from one tropic level to another is.
Option A is the right one, that is 10% law. Next question is, amniocentesis is a technique used to. Then option C is the right one, that is determine any hereditary disease of the embryo. Next question is, discovered that green plants require sunlight for their nutrition. Then option D is the right one, that is Stephen Hales. Next question is 77. A cross is made between tall tea plant having green pods and dwarf pea plant having yellow pods. Tall plants in F2 generation out of 16 would be. तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट वन, दैट इज 12. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सेल swells up when kept in. Option C is the right one, that is hypotonic solution. Next question is 79. Organisms living in salty areas are called. Option C is the right one, that is halophiles. Next question is, dinosaurs were present during which era? Option A is the right one, that is Mesozoic era. Next question is, the cells called podocytes occurs in. Option D is the right one, that is inner wall of woman's capsule. Next question is 82. Hemoglobin has maximum affinity to. Option D is the right one, that is CO, carbon monoxide. Next question is, insulin promotes. Option B is the right one, that is glycogenesis. और देखिए फ्रेंड्स, एक न्यू नोटिफिकेशन है, अगर आप HP TET, HP पटवारी, HP कांस्टेबल या जो भी HP में एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप जो है वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल होता है. इस ऐप पर आप HP में होने वाली वेरियस टेस्ट सीरीज़ की जो बुकलेट्स हैं वो ख़रीद सकते हैं, बुकलेट सीरीज़ आप ख़रीद सकते हैं. और अगर आप हमारे चैनल के जो कूपन कोड है दैट इज़ GENIUS50 का यूज़ करते हैं तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा. तो देखिए ये बहुत ही हेल्पफुल है और 50% ऑफ है तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. आपको जो है वो ऐप का लिंक और कूपन कोड दोनों ही जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उनका लिंक मिल जाएगा. तो देखिए आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, जो बुकलेट सीरीज़ हैं वो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन है 84. गोल्डन राइस इज़. गोल्डन राइस क्या है? तो देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम जो है वो एग्ज़ाम में जो है ये आता है क्वेश्चन. तो इसका करेक्ट आंसर है option A is the right one, a transgenic rice having gene for beta carotene. Next question is 85. Color blindness is due to defect in. Then C is the right one, that is cones. Next question is, metastasis is associated with. Then option B is the right one, that is malignant tumor. Next question is 87. Which layer develops first during embryonic development? Then option B is the right one, that is endoderm. Next question is क्रोच इज. तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट वन, दैट इज 13 चैम्बर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89. फंक्शन ऑफ tapetum is. Option C is the right one, that is nutritive. Next one is 90. Polymerase chain reaction is used in. तो
देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट वन, दैट इज डीएनए एम्प्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज release of pancreatic juice from pancreas is stimulated by, option A is the right one, that is cholecystokinin. Next question is 92, which is not true about insects, then option B is the right one, that is respiration occurs through Malphizian tubules. Next question is 83, anticodones are located in, option C is the right one, that is tRNA. Next question is cryosis of liver is caused by the chronic intake of, option A is the right one, that is alcohol. Next question is 95, molecular seizure which cut DNA is, option D is the right one, that is restriction endonuclease. Next question is which of the following is not a functional unit of an ecosystem? Option A is the right one, that is stratification. Next question is 97, reptiles of plant kingdom is, then option is none of the above. Next question is 98, the cell organelle without limiting membrane is, तो देखिए इसका भी कन्फ्यूज़न ही है, बाकी जो भी आंसर की के अकॉर्डिंग होगा वो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, सन प्लांट्स आर, देन ऑप्शन ए इज द राइट वन, दैट इज हेलियोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन डी इज द राइट वन, दैट इज विलियम वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 101, hepatic portal vein extend between, option B is the right one, that is alimentary canal and liver. Next question is antibodies are produced by, option C is the right one, that is lymphocytes. Next question is 103, surrogate's mother is, then option C is the right one, that is a woman who substitute the real mother to develop the embryo. फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास जो है वो सबसे पहले अपडेट्स पहुंच जाए। इससे पहले जो है वो हम केमिस्ट्री सेक्शन और जीके सेक्शन जो है वो टैट मेडिकल का डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोस को चेक नहीं किया है तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, 104 is if the nucleus cell of an angiosperm contain 24 chromosomes, the number of chromosomes present in pollen grain, endosperm and embryo will be, option D is the right one, that is 12, 36 and 24. Next question is 105, DNA fragments are, then option C is the right one, that is negatively charged. Next question is the most abundant protein in animals is, option C is the right one, that is collagen. Next question is the odd one is, option A is the right one, that is sweet potato. Next question is by Robert Hooke in which he explained the discovery of cell, then option C is the right one, that is micrographia. Next question is poikilotherms are, then correct answer is option C, both A and B. Next question is 110, a bisexual flower which never opens in its lifespan is known as, option A is the right one, that is Clistogamous. Next question is
111. The net gain of ATP during glycolysis is. Option B is the right one, that is 38. Next question is an abiotic component of the ecosystem. Option C is the right one, that is humus. एबायोटिक होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, और तो यहाँ पे ह्यूमस ही इसका राइट वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेग हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन, देन ऑप्शन सी इज द राइट वन, दैट इज प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजनेज फ्रॉम O2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 114. In angiosperm, lateral roots arise from. Option A is the right one, that is pericycle. Next question 115. The technique of obtaining large number of plantlets by tissue culture method is called. Option B is the right one, that is micropropagation. Next question 116. Produced by recombinant DNA technology is. Option B is the right one, that is insulin. Next question. The stimulant present in tea, coffee and cola drinks is. Option D is the right one, that is caffeine. Next question 118. Cells that do not respire are. Then option B is the right one, that is erythrocyte. Next question 119. Corpus callosum is formed between. Then option C is the right one, that is cerebral hemisphere. Next question. 3 girls, the percentage of probability of fourth child to be a girl is. तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द राइट वन, दैट इज़ 50%। तो ये इस सेशन में हमने डिस्कस किया बॉटनी और जोलॉजी के सेक्शन जो कि टैट मेडिकल 2020 के हैं। तो फ्रेंड्स इससे पहले जो है वो हम केमिस्ट्री सेक्शन और जीके सेक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं, आप चैनल पर जाकर उनको चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।